we are going to see how to use Pivot ADX and DMI and find out some option trades. Again, we look at the same setup और जैसे ये हो जाता है, okay, go in for a in the money option. Okay, you can see here. You see this happened on the 18th. You can see here the movement from 18th. It moved from 12 rupees to 28. All directional people. Many people want to trade options intraday, right? But options, sometimes you get money intraday. Otherwise, many times you can get money on a multi-day basis. Options I find is a good multi-day trade possibility. लेकिन अगर आप डायरेक्शनल प्ले करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम में आएगा बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. वी आर आइडेंटिफाइंग सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसके आगे हम काम कर रहे हैं. सो उसको देकर काम करेंगे तो आपको फायदा होगा. सो अगर आपको सेटअप लेना है, आई हैव सीन द सेटअप ऑन 30 मिनट्स. ये तो चार्ट एग्जांपल के तौर पे, बट मैं ट्रिगर ले रहा हूं फ्रॉम द 30 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, मैं ट्रिगर ले रहा हूं 30 मिनट टाइम फ्रेम से. ये आपको बता रहा हूं कि क्या पोटेंशियल था. विद इन 3 days potential of 20%, 18% was possible. The same way in HDFC. यहां से एंट्री पॉसिबल था और ओके, ये एंट्री पॉसिबल था. ये HDFC है. ओके, this is HDFC. This is wrong one. This is HDFC. You can see the HDFC movement on 18th. So on HDFC, you can see here the movement which is there on HDFC moved from 20 to 68. HDFC moved from 20 to 68. Okay, so you can see here that if you are waiting for the opportune levels, if you are waiting for the trend strength, and if you are participating, when all these things combine, it gives you a very explosive result. How many of you are getting it? कि हमने सेम चीज यूज किया ऑन प्राइस एक्शन और हम अभी सेम चीज यूज कर रहे हैं टू गो इन फॉर अ इन द मनी कॉल. यहां से हमने इन द मनी कॉल किया. तो प्राइस हैव गॉन अबाउ आर H4. ये प्राइस हैज गॉन अबाउ H4 और उसकी वजह से आपने एंट्री लिया. ये आपने यहां पर एंट्री लिया और किसका एंट्री लिया आपने? ऑप्शन का. कैन सी हियर आपने 2660 का इन द मनी कॉल का आपने ऑप्शन लिया और ये आपको ट्रेड मिला. नाउ यूजिंग द प्राइस ADX एंड DMI, आपने उधर पिवट यूज किया तो इसको यूज करके हम देखेंगे कि मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कैसे ले सकते हैं. ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन टेक सम मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी. तो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के लिए आपको जानना है कि मार्केट कब न्यूट्रल होगा? जब डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स इज लाइंग लो. I am repeating, when directional movement index DMI is lying low. And when the DMI is lying low and it is below 25, it indicates that there is no clarity in the trend. So you can see here, this is the chart of Bank Nifty. And this is what it looked like. Okay, this is what it looked like. So last week, okay, last week you can see here on the expiry day, you can see here that there was a short straddle. Is everyone still with me or everyone gone to sleep?
इज एवरीवन स्टिल विद मी और गॉन टू स्लीप? सब लोग जागे हैं? आपको लंच का बुलावा नहीं आया ना? संडे स्पेशल लंच बुलावा नहीं आया ना आपको? ठीक है, थोड़ा रुकिए, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. All right. So what is happening here? We are selling a put and selling a call. Selling a put and selling a call at the same strike. We are doing short straddle. तो हम लोग ने इसको 220 में बेचा, इसको हम लोग ने 130 में बेचा. क्यों? क्योंकि इसके पहले चार्ट आप देखेंगे, ये ADX and DMI, they are below 25. Just understand it. We will see how to implement it further, but this is how you go about doing a short straddle. Getting it? क्योंकि आपको दिख रहा है कि कहीं पर नहीं जा रहा है. You are finding that the price is not going anywhere. So I can look at the short straddle and select the particular strike. And now when you go for this, okay, when you go for this movement, you got to see the इंट्राडे चार्ट्स. आप देखेंगे कि ये मैंने डेली चार्ट्स के बेसिस पे किया है, क्योंकि डेली का चार्ट्स एकदम साइडवेज था. और आप देखेंगे कि ये ओवरऑल जो है इसका, राइट, इसका ओवरऑल जो है कहां पर आईवी थोड़ा हाई था. ऑलराइट, दैट इज वेयर यू शॉर्टेड. सो व्हेन आईवी इज लो डोंट सेल, सेल व्हेन आईवी इज हाई. नाउ अगेन यू विल सी दिस इज ऑन अ स्टॉक. ये एक स्टॉक पे है, एक इंडेक्स पे था, एक स्टॉक पे. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ओके, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर वी आर ट्राइंग टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. सो यू कैन सी हियर दैट द प्राइस इज अगेन नॉट गोइंग एनीवेयर स्पेसिफिक. यू आर ट्राइंग टू अराइव एट अ रेंज. आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉर द एंटायर मंथ द प्राइस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. What you do when it is like that? You give some room for movement and then you do a short strangle. Can you see here? You are doing a short strangle. So when you are doing a short strangle, okay, when you are doing a short strangle, what do you do when you are doing a short strangle? When you are going to execute a short strangle, you are going to again sell a put and sell a call at a higher strike. So you are selling 860 put and 890 call. यानी आप थोड़ा रूम दे रहे हो. ओके, यू आर सेलिंग, गिविंग सम रूम एंड टुवर्ड्स द second half of the expiry. Towards the second half of the expiry is when you are doing the short strangle. Normally आप देखेंगे लोग अक्सर शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल ही करते हैं. How many of my SMM family are doing active straddle strangle? Okay, some of you have said yes. So normally you do it towards the second half of the series. So you can see here that where you are more sure that the time is in your favor, theta decay हो रहा है और आपको it will not go against you. And you can see here that this scenario, okay, this scenario is giving you that result, right? So now if you see here that whatever strategies which we have discussed is covering both sides of the spectrum. It's covering directional plus it is covering the other side, which is the neutral. So as part of this workshop, what I have done is I have taken strategies, I have taken care of intraday, and I have given you a strategy for multi-day. You can do this on price action. You can do this on option. Now in option, we have discussed directional strategies. We have discussed market neutral strategies. अभी ये सब चीजें आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको खुद एक बार डिस्कस करना पड़ेगा इंटरनली, और तो ही जाकर आप आपका जो कनेक्ट है
with the content and within yourself, आप उसको connect कर पाओगे. How many of you saw Avatar? How many of you saw Avatar? Okay, some of you saw Avatar. Some of you did not see Avatar. No problem. Okay, so Avatar में आपने देखा होगा कि the first, okay, they were actually living on the mountains, right? They were living on the mountains. But then after they were forced to leave the mountains, they came to the sea. And what did they do? They adapted themselves to the sea, right? And it took time, but they adapted themselves. And in Avatar, okay, in Avatar movie, you will see that the way they connect with all the animals. उनका वो जो चोटी रहता है, वो चोटी लेके उन लोग कनेक्ट करते हैं. पहले वो सी एनिमल्स के साथ उनका ट्यूनिंग बैठता नहीं है, बट उनको पता है कि उनको अगर सरवाइव करना है, if they have to survive, then they have to build a connection with that animal. And that's what they do in Avatar. They build connection with those water animals, and those water animals become the friend. So in the same way, initially you may not like option. Initially you may feel options is very complicated. But then just like that Avatar movie, if you are able to build that connection with option, you will be able to see the market in a much better way. Because I truly believe that options are going to become more and more interesting and more necessary for us to understand. तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन की दुनिया को समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने ऑप्शंस को डिटेल में समझाया है